Ladies and gentlemen, Chairman Bharatiya Vidya Bhavan, Chandigarh Kendra, Shri R.K. Sabu has arrived. May I request you to please rise and accord him a warm welcome. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. Before we begin with this event, I would like to inform the audience that our chief guest, His Excellency Shri Banwarilal Purohit, Governor Punjab and Administrator UT Chandigarh, is presently busy on an urgent call with the Prime Minister and would be delayed in arriving here. He has requested us to begin the program as scheduled and would be joining us shortly. A very good evening to all and welcome to the Chandigarh Contemporary Art Festival 2022. On behalf of Infosys Foundation Bengaluru and Bharatiya Vidya Bhavan, I extend a warm welcome to Shri R.K. Sabu, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan Chandigarh Kendra, who will be presiding over today's event. A warm welcome too for our esteemed guests of honor, Shri K.G. Raghavan, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra, and Shri Sameer Goyal, Head, Infosys Mohali. I also welcome Srimati Nagalakshmi Rao, Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra, Shri Jagesh Khaitan, Vice Chairman and Treasurer, Chandigarh Kendra, Shri Madhukar Malhotra, Secretary, Chandigarh Kendra, our esteemed Kendra Committee members, eminent Utarians, members of the press, and our other distinguished guests. Our mentor and patron, Shri R.K. Sabu, Chairman of Bharatiya Vidya Bhavan Chandigarh Kendra, has been associated with the institution right from its inception, from the past several years. An eminent industrialist whose name features amongst the most respected in the city, he has been a dedicated Rotarian for years and has had the rare honor of holding the position of the President of Rotary International. A humanitarian in the true sense of the word, he is the proud recipient of one of the highest civilian honors, Padma Shri, which was conferred on him in 2006 by the then President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, for championing the cause of the less fortunate. An educationist to the core, Shri Sabu has been dedicated to the promotion of educational excellence in the region for many decades. And for us at Bhavan, he has always been a pillar of strength, encouraging and supporting us in all our ventures. It is due to his vision and relentless endeavors towards promoting educational causes that today Bhavan stands tall as one of the most prestigious educational institutes in this region. We are indeed honored to have you here, sir, and believe that your presence itself is a tremendous source of inspiration for all of us present here. A very warm welcome too to our guest of honor, Shri K.G. Raghavan, Chairman Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra. A renowned senior advocate at the Karnataka High Court, Shri Raghavan practices in areas of arbitration and commercial, corporate, civil and constitutional litigation. His experience includes both original and appellate work, appearing before the Supreme Court, various high courts, as well as tribunals and company law boards. Shri Raghavan is also a member of the Supreme Court Bar Association. We also extend a warm welcome to our guest of honor, Dr. Sameer Goyal, Head Infosys Mohali, who is representing the Infosys Foundation here today. A PhD from IMT Ghaziabad on development of framework for successful implementation of e-governance programs in India, and a gold medalist, postgraduate in management from XLRI Jamshedpur. Dr. Sameer Goyal is the global head for mainframe modernization at Infosys Chandigarh. He is also development center head for Infosys Mohali with over 29 years of experience in managing large IT business and global business portfolios of more than 200 million. Our esteemed guest was also the former chairman for Confederation of Indian Industries for Chandigarh region and a former member of Board of Governors for the Peck University of Technology.
I now request Chairman of the Cultural Committee, Bharatiya Vidya Bhavan Chandigarh Kendra, Shri Manmohan Singh Kohli, to welcome our respected Chairman, Shri R.K. Sabu. Thank you, sirs. Once again, I request Shri Manmohan Singh Kohli to felicitate our guest of honor, Shri K.G. Raghavan, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru Kendra. Thank you, sirs. I now request our Vice Chairman, Shri Jagesh Khaitan of the Chandigarh Kendra, to kindly welcome our guest of honor, Shri Sameer Goyal. Call upon Shri Manmohan Singh Kohli, Chairman Cultural Committee, Chandigarh Kendra, to come on stage and welcome everyone present here for this first edition of the Chandigarh Contemporary Art Festival. Good evening, dear friends. What a momentous occasion it is for us at the Bhavan to have all of you here with us. This program was crafted very recently. In fact, as a chairman of the Cultural Committee and my committee, we had started working on this before pandemic also to have one or two programs. But I think the post-pandemic period brought us a bonanza that we at one time got an opportunity to present a 7-day-long festival here in Chandigarh. And much more beautiful than that is our association, our partnership with the Infosys Foundation, another very ethical, measured, a beautiful organization, which as the Bhavan, as our ethos to have our Indian culture in place, they too have the same thing. And I don't think that such two beautiful institutions could come together in normal sense to make it happen and bring our great Indian culture and art to all of us. A brief from Infosys and from our chairman, Shri Sabu, was, let's promote people from our region. Let's bring forward that talent which does not get an opportunity to reach national and international level. And this, dear friends, is a beginning of a platform where somebody can say, I performed at the Bhavan and the Infosys occasion. I think we would have done all this labor we have done, all this, the sweat gone into this would find its purpose, would find its destination if we can groom our artists from this area and bring them forth to an international level. Having said that, a little bit about the program. We often say that India is a diverse nation. We are made of so many. We are a bouquet. And this thought came into our mind that how do we bring a qawwali, a piano recital, a Kathak dance, a ballet drama, art drama, another theater, and bring all these together. Even for these 7 days, this stage will see 7 new avatars, each one complementing the culture it will display. And that was one thing at our heart, that if we have to do a 7 days program, it should be a program, it should be like a small bouquet with flowers from every background. I don't want to use the word religion, but I would say faith. That was the idea, to have
this program together. And let me say, it's not easy. Even for one evening, one has to put in a lot of sweat. But hats off to our team at the school, our support from the Infosys, such rapid communication. You write a letter and another minute you get a reply back. I think we all got geared up, and I would not be doing justice to my little 2 minutes if I don't acknowledge the effort of everybody here, not only from the management of the school, from our committee members, but even from the artists who have adjusted times, timings and things like that. In end, it's a teamwork. If there are any lapses during these 7 days, we take responsibility. If everything goes good as we expect it to be, then it is everybody's effort. Thank you very much, and a warm welcome to all of you here today, this evening. Thank you for being here with us. Your being here gives us that great adrenaline to carry it further. And believe you me, this is just the beginning. Next year, when we have this opportunity, which I'm sure we will have, this will be a much, much bigger and a better show. Thank you so much. Thank you, sir. And now I request our guest of honor, Shri R.G. Raghavan, Chairman Bharati Vidya Bhavan Bengaluru Kendra, to kindly address all gathered here. Good evening, ladies and gentlemen. Respected Chairman of the Chandigarh Kendra of the Bharati Vidya Bhavan, Shri R.K. Sabu, the office bearers of the Kendra, teachers, and the art lovers who are gathered here. At the outset, thank you very much for giving us this wonderful opportunity of being with you on such a momentous occasion. I call this a momentous occasion for one very important reason. I am sure all of you know the background of Bharatiya Vidya Bhavan. Bharatiya Vidya Bhavan was conceived as an institute of eminence and an institute to promote Indian art and culture by a great lawyer, the constitution maker, a writer, a dramatist, a literator, and a politician, Dr. K.M. Munshi. Though India attained political independence in 1947, Dr. Munshi envisaged the creation of an institute like Bharatiya Vidya Bhavan even several years before India attained independence in 1936. He knew that what India had lost on account of a prolonged foreign rule was not only its political independence, but it had made a severe dent on the art and culture of this country. And it is therefore he earnestly felt that unless we revive the art and culture which so proudly belong to this nation, India is not truly independent. It is with that objective that, with the blessings of his spiritual guru Mahatma Gandhi and political guru Sardar Vallabhbhai Patel, that Dr. Munshi conceived the creation of an institution which today occupies a very important position in the cultural map of India. Now, why, you may ask, did Dr. Munshi name the institute as Bharatiya Vidya? Obviously, for Dr. Munshi, Vidya has no frontiers. It surpasses all religions, all nations, all races, and all denominations. And that is the speciality of Bharatiya Vidya. Bharatiya Vidya, therefore,
encompasses, as envisioned by Dr. Munshi, education in all forms of art and culture coming from every part of the world. And that is the reason why Dr. Munshi chose the famous Rigvedic statement, Ano Bhadraha Krutavo Yantu Vishwataha, namely, let noble thoughts come to us from every side, as the motto of Bharatiya Vidya Bhavan. And way back when he thought of this institution, what today has become the tagline for the G20 summit, Vasudhaiva Kutumbakam, was in fact the foremost thought in the mind of Dr. Munshi when he created Bharatiya Vidya Bhavan. Satyam Shivam Sundaram, Ano Bhadraha Krutavo Yantu Vishwataha, and Vasudhaiva Kutumbakam is a tripod on which this wonderful institution, which is apolitical, which has no barriers of any kind, stands today proudly presenting to the world that art and culture has no barriers. It is that message that is sought to be conveyed by these festivals that are being planned all across the country, to show to the world that India is a wonderful nation of unity amongst diversity, and we are one in our culture. And I told you that this is a very momentous occasion, and I told you what Bharatiya Vidya Bhavan stands for. Now today, there is an occasion for two mighty institutions to come together, that is Bharatiya Vidya Bhavan and Infosys. Would you envision a tree which has no shoots? Obviously not. We would like to have a tree or a plant which has its roots deep buried inside the earth, but on this top we would like to have new shoots. And what makes the tree beautiful is that it is wedded in firmness to the root, but with new shoots on the top. That is the momentous relationship between Bharatiya Vidya Bhavan and Infosys. Infosys is a premier technology company of this country, looking forward, giving to us the new technology which has changed our lives in every sphere of our activity. But it is the coming together of this new technology with the old values of Indian art and culture that makes life beautiful. And it is that message that is sought to be conveyed by the coming together of these two mighty organizations, which is only to spread the message that we are all one, even though working in different spheres and coming from different dimensions. Ladies and gentlemen, you have seen that today there is a lot of talk that is being spread about how India is a divided country. That is far from truth. We are a one nation, and the coming together of the various kendras of the Bharatiya Vidya Bhavan with the support of Infosys Foundation is a clear message that we are all wedded together in the promotion of this art and culture. It is with that objective that these programs have been commenced, and I am sure every one of us will benefit by these programs. Not only will we enjoy these programs visually to our hearing, but also carry with us the noble thoughts that these two mighty institutions of this country convey to the whole world. Without the support of Infosys Foundation, this program would have been impossible. And therefore, both on behalf of the Bharatiya Vidya Bhavan Chandigarh Kendra
And on behalf of Bharatiya Vidya Bhavan Bangalore, I convey to Infosys Foundation our deep sense of gratitude. All that we can say on behalf of both the institutions, I can say is, sir, we shall redeem the trust and faith that you have placed in us. We shall carry forward this mission from strength to strength and showcase to the world that we are indeed a great nation as we have always been. Ladies and gentlemen, it is our earnest request to all of you to please assemble in large numbers on every one of these 7 days, encourage the artists and promote the cause of art and culture. Without art and culture in our life, we would be animals. The only difference between animals and a human who does not have an inclination towards art and culture is that the human does not have a tail. We do not want to be that. In the progression or the evolution of living beings, we are at the top of the pinnacle. And let us therefore live up to the expectation of being at the top of the pinnacle, and an ear, an eye, and a mind towards art and culture is a necessity for leading a happy and a noble life. With these few words, I thank you very much for your patient hearing and wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for that truly enlightening and inspiring address. I now request our esteemed guest of honor, Shri Sameer Goyal, Head Infosys Mohali, to kindly come on stage and address this august audience. Chairman Bharatiya Vidya Bhavan, Rotarian and my senior, Shri R.K. Sabuji. Chairman Bharatiya Vidya Bhavan Bangalore, Mr. Radhanji. My friend and colleague, Mr. Manmohan ji and Mr. Madhukar Malhotra ji. Other dignitaries which are there, all the performers who are going to perform for next 7 days. I think they are the actual chief guests of this event there. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to be representing Infosys Foundation at this great event. Infosys Foundation and Bharatiya Vidya Bhavan actually came together in 1997 with the focus of actually bringing art, culture, all the forms of art into limelight and giving opportunities to some of those dying art forms which are there. It's certainly like coming together of two large organizations. As we understand, Bharatiya Vidya Bhavan is an institute of national importance. What this institute has achieved, I think I was talking to Raghavanji, 300 institutes across India, pretty much present in all the parts of all the different regions of India. Obviously, this organization has achieved a lot. And as far as Infosys Foundation is concerned, bringing up, giving focus to all the different aspects. In fact, the kind of diversity which we have on the activities done by Infosys Foundation, right from supporting women empowerment, education, healthcare. We have been kind of working in all different areas to support that, and I'm really very happy that we are working so strongly in this area. This particular agreement was signed in August 2022, very recently, only about 3 months back, where we'll be supporting 7 cities. So the first one actually happened in Mysore, and I'm pretty happy that the second one has come back in my own home city, Chandigarh, and then there are other 5 which are already planned. Specifically, I can tell you from a local leadership perspective, it's our endeavor to bring more and more Infosys Foundation activities to this region. So we have been continuously working. Some of the other activities which we have done in this region is like we have a huge meditation hall. I don't know how many of you have seen.
in Sector 15, Ram Kishan Mission Ashram, which was done by Infosys. I'm sure all of you are aware about that Infosys Sarai in PGI. In fact, we never intended to name it Infosys Sarai. It was just there, but I think spontaneously it got named as Infosys Sarai. It has a 5-bedded space which is there. During COVID, we worked very extensively with Punjab, Haryana governments, Chandigarh, to support in all the areas. We built up an oxygen plant in Civil Hospital Kharad. So that has been our focus area, especially during COVID when those PPE kit was a rare commodity. Infosys could use its influence where we worked and government helped us, where Air Force actually airlifted we kind of put an order for some few lakh PP kits, and they airlifted and delivered at all the centers. So in a way, we could get the first lot and give it to our medical institutes here in PGI and all. So they still remember that we got lot of PP kits after that. It became a commodity after that. But sir, first one aapka yahan se aaya tha when we were kind of really in dire need. So that's the kind of activities which have happened. As part of this initiative, we are going to promote more than 4,500 performers, artists of different areas. So this is a great event, great opportunity for these artists. And as sir said, please do come in large numbers while these events can happen, but they need to perform in front of the field hall. That's the opportunity which all of them are looking actually. Doing social service activity is actually part of the ethos of Infosys. We have about 10,000 employees working in this region. We came in this region way back in 2000. And in last 22 years, we have grown to 10,000 employees working out of our Chandigarh, Mohali offices. In our small way, we are kind of influencing the city, contributing to the city. So we have a culture where there is our own employees have created a NGO by the name Arpan, and which actually is at the forefront of all the activities which are done. So some of these are like agreements which are done at an Infosys Foundation level, but all other activities, they take input from our NGO Arpan from the ground root level. So they'll not come to Samir, they'll not, okay, ask me, give me a list of social activities you want to do it, because they believe head of the institute, head of the place will always think from what is good for business and all. So they'll actually take those activities from our NGO, our Arpan group, on what activities we are doing. For last almost like 15 years, we have every quarter a blood donation camp happening along with GMCH and PGI. So those are the activities which we have been doing, and we are all proud of it. We have an initiative Padhai, where we are working with Chandigarh Education Department towards improvement of curriculum, bringing experiential learning in primary education. Because right now we get too much into rote learning at too early stage. So we actually did a pilot for a couple of schools. Chandigarh Education Department liked it, and now they are requesting us to roll it out to other schools also within this. So those are some of the events which we do actively participate. We have a lot of work which we do for women empowerment, especially working with Ma'am Sudha Murthy. In fact, this whole art thing comes from her basic thought process. So when she came here, Chandigarh, she said, Samir, wo ek yahan ka wo art culture hai. Then she was talking about Fulkari. We said, how are Fulkari workers doing? Are they making enough money? Can we do something for them? I want that this art form should not die. So that's the kind of focus. Even Infosys culture of having our offices pretty much. So if you see, we are not in some of these metros and all. We are primarily, we are not in Delhi, we are not in Calcutta, we are not in Mumbai. We are in, let's say, Chandigarh or Bhubaneswar or Trivandrum. The whole thought has been that employees are most productive when they are working in their old cultures. So let's not hire a lot of employees and take them to it. I know Bangalore has now become a metro, and obviously when we started way back, obviously it was not a metro at that time. So there are a couple of these cities, but otherwise most of our other cities we have created in so to say tier 2 cities, with the primary aim that employees should be able to work in their old cultures, enjoy their roundabout, their families and all, because that's the time when they are most productive. So with this, I give best of luck to all the performers. I request again you to kind of come for this
event actually motivate them. And if, as Manmohanji said, if we can get some few of them going into national level after performing here, I think we can pretty much create an institute. This event is now, this agreement is there for 3 years, so it will happen every year. This is the first year. So in a way, we have a roadmap, and we can start selecting performers for next year. This year, as we didn't get much time, so the institute has done a great job in quickly pulling up these people. But next year, we'll have more time, so we can be more thorough with identifying these folks. And actually, performers should be looking forward to get the opportunity to perform at this stage. And if we can create that kind of positioning for ourselves, it's really great. So thank you for inviting us. Thank you for making us part of this event. Really look forward to contributing it in a meaningful way. Thank you. Thank you, sir, for your motivating and enlightening words. I now request our esteemed chairman, Bharatiya Vidya Bhavan Chandigarh Kendra, Shri R.K. Sabu, to share his thoughts with us on this special occasion. Greetings to all of those who are here. And this is an event that we have been waiting for a long, long time. And it is a great honor to host this week-long contemporary art facilitated, and it is I would like to opportunity to express to our gratitude to the Infosys Foundation, because they have been partners for us, and we hope that in the future we will continue to do that, because this we are going to have a new places what we will have do. And we have come Shri Samir Goel, who is the on here Chandigarh in charge of and Infosys has in Chandigarh has a very strong, not only professional, but also to even also in the Ramkishan mission, and also here now in the cultural activities. And we are very happy and honored and privileged that Shri Raghavan, who is the chairman of the Bangalore Bharatiya Vidya Bhavan Center. And he came this morning, and tomorrow morning he is going back. And in this, when he talked about that, he took you the whole scenario of what the Rotary Bhavashan stands for, and Dr. K.M. Munshi had done when he did in 1937. And it has come up, and this is where we are. In 1978, we had been established the this
Chandigarh Kendra through Hathiji when he was the governor of Haryana and then Punjab. And he was wanted to have that we have the cultural center and or education. And that is what he has come. The ethos of Bharatiya Vidya Bhavan Chandigarh Center reflects the philosophy which has been already been expressed to you. Our collaboration has with Infosys. We have been a remarkable. It is a new dimension that Bharatiya Vidya Bhavan of Chandra, this company, this town Kendra, Chandigarh. My colleagues are Madhukar Malhotra, Shri Manmohan Kohli, Srimati Ninu Vij, supported by, and of course we are here, the Vice President and Treasurer Khitanji, and the supported by Vinita Arora, who is the not only the senior principal but also the education director. We have now 2 schools, and now it has gone to 3 schools. This encourage to the this event has encourage the local artists, and we hope that gradually we will be able to not only to have them come here, but also to have the local students to be given this artists and to be a part of it. This is a new dimension. Our Bhavan Vidya Vale has been a center which we have done. We have now, as far on the education, it has been not only Tri-City, but route at the academic nationwide. And now he has come to the way the people want to come to have admission in Bharatiya Vidya Bhavan. And this is, and now that it was only the education, and it has now we are going to have the new area which will take to new heights of culture. And this is why we want to have to be Bharatiya Vidya Bhavan here, which Chandigarh has here, which is the dream of Hathiji and Munshiji. And this is, we will take it new heights. And this, and I would like to also apologize, but this is something that could not have been done, was the Honorable Governor and the Administrator of UT, Shri Banwarilal Purohit.
he had to come here at 5. And I know I am very prompt. But he has been asked for the Zoom meeting from the Prime Minister. And for that, I have been giving every minutes by minutes how much it will take time. So I first said he would come 6:30. But please have patience, and he may come around 7 p.m. But I can tell you, he is a person who is a mentor for Bharati Vidya Bhavan. And he, when he comes and talks to you, you will find something new inspiration from him. And I know that we are in Chandigarh are very fortunate that he is here. And we have the opportunity that he is here. And he is coming from Nagpur, and with so many schools that he has known of Bharati Vidya Bhavan. He has every iota of her blood about Bharati Vidya Bhavan. And when he comes, we are looking forward to him. And this is during time we have all the arrangements and cultural activities has been done. So enjoy that. And once again, I thank all those who have arranged that. And don't go before going to the arts that exhibition that has been done. This is something that we have started, and your encouragement will be keep us to going miles and miles and miles. Thank you very much. Thank you, sir, for your enlightening and motivating address. Through the ages, as mankind faces a complex myriad of challenges, opportunities, and experiences, the one stable, resilient anchor that keeps it rooted and unified is its rich legacy of art, culture, and traditions. This art and cultural festival stands testimony to our commitment to preserve this legacy and nurture it further for the coming generations. This initiative by the Infosys Foundation Bengaluru, in collaboration with Bharatiya Vidya Bhavan, is one of the numerous such endeavors that the Infosys Foundation has organized all over the country to promote upcoming artists, especially those from weaker sections of society, as well as for reviving old arts and crafts that are on the brink of being forgotten. Ladies and gentlemen, this week-long festival is sure to enthrall each one of us with a diverse array of performances and works of art. बरसों से मनुष्य अपनी जटिल एवं असंख्य समस्याओं और चुनौतियों के बीच उलझता चला आ रहा है। इन सब से उबरने का एक ही माध्यम है, हमारी कला, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं।
भारतीय संस्कृति मूलतः मनुष्य के आध्यात्मिक विकास पर बल देती है। आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही सांसारिक विकास दृढ़ और सफल होते हैं। समकालीन कला उत्सव का आयोजन हमें अपनी कला और संस्कृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है। यह पहल हुई है इन्फोसिस फाउंडेशन बेंगलुरु और भारतीय विद्या भवन बेंगलुरु और चंडीगढ़ केंद्र द्वारा। यह प्रयास है कला और कलाकारों का मनोबल बढ़ाने का, उन्हें प्रोत्साहन देने का और प्राचीन कला और शिल्प कौशल को पुनर्जीवित करने का। सभाजन, इन 7 दिनों में कला की जिस यात्रा पर हम ले चल रहे हैं वह इन्हीं मूल्यों का रूपांतर है। कला के इस संगम में जहां आप संगीत, गायन और वाद्य यंत्र के अनुपम आनंद उठाएंगे, वहीं आप नृत्य, नाटक और नृत्य नाटिका का भी मनोहारी प्रस्तुति देखेंगे। जो धरोहर हमें पूर्वजों से मिली है, उसे संजो कर रखना व उसे आगे बढ़ाना हर पीढ़ी का कर्तव्य बनता है। युगों युगों से भारतीय संस्कृति, कला व संगीत के माध्यम से यह संदेश जन जन तक पहुंचा रही है कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापी है और कण कण में है। भौतिक उन्नति आध्यात्मिक ज्ञान के बिना अर्थहीन है। दर्शकगण, अभी कोहली सर ने कितना सही कहा कि हम इन 7 दिनों में इस मंच पर कला के विभिन्न अवतार देखेंगे। आज यहाँ भारतीय कला व संगीत के अलौकिक रूप का प्रदर्शन होगा, जो 7 सुरों के संगम से हमें नर से नारायण तक ले जाने का मार्ग दिखाएगा। आज की सबसे पहली प्रस्तुति है शिव स्तुति, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं सुश्री गीत राव। गीत राव जी एक कुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ इन्होंने पालतू पशुओं से संबंधित क्षेत्रों में भी अपनी रुचि को दर्शाया है। पशु आहार की ये एक विशेषज्ञ भी हैं। इन सब गुणों से संपन्न आप एक आध्यात्मिक साधकिका भी हैं। तो आइए सुनते हैं इनके भावपूर्ण स्वर में शिव आराधना। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार. Thank you to all of you for being here. I would like to thank the management of Bharatiya Vidya Bhavan for giving me this opportunity to perform in front of such an esteemed audience. We're going to chant some Sanskrit mantras. Before we begin that, very briefly, I'd like to tell you something about mantras. मंत्र शब्द बनता है 2 शब्दों से, मन और त्र. मन, अपने मन को वश में रखना, इस बात को हमारे भारतीय शास्त्रों में बहुत ही महत्वता दी गई है, क्योंकि मन ही तो है जिसमें विचार उठते हैं, और विचार है जो हमारा कर्म बनते हैं, और कर्म ही तो हैं जो हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं. तो क्या मन से ही हमारा भाग्य निर्धारित नहीं होता? इसीलिए मन को वश में रखना, इस बात को हमारे शास्त्रों ने बहुत महत्वपूर्ण समझा है, और इसके लिए अनेकों विधियां बताई हैं, जिनमें से एक है मंत्र. मन और त्र यानी कि टूल्स. सो अ टूल दैट हेल्प्स अस टू कंट्रोल आवर माइंड इज कॉल्ड अ mantra. And essentially these mantras are in Sanskrit, not in any other language, but in Sanskrit, because Sanskrit is the only language which takes into account not only the meaning that we want to convey, but also the effect of sound on human psychology, on human conscience. Just to give you an example, अगर आप शांति को महसूस करना चाहते हैं और आप इंग्लिश में आंख बंद करके चांट करें पीस पीस, और यहीं अगर आप 2 बारी आंखें बंद करके संस्कृत में चांट करें शांति शांति,
शांति जैसे ही आप चैंट करेंगे, you will feel and experience peace in your mind, body and soul as well. So आइए शुरू करते हैं ये कल्चरल फेस्टिवल महादेव शिव भगवान की आराधना से कुछ एंशिएंट महामंत्रों के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। अब आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखा हुआ एक स्तोत्रम। इसको कहा जाता है गुरु अष्टकम। आज हम गा रहे हैं आदि गुरु शिव जी को आदर करते हुए, क्योंकि वही पहले गुरु रहे हैं जिन्हें मनुष्य जाति को उसके जीवन के लक्ष्य का ज्ञान दिया कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आत्मा का मोक्ष। और यदि हमने अपने आप को उस गुरु को कभी समर्पित नहीं किया तो जीवन में कितनी ही सुख समृद्धियाँ क्यों ना प्राप्त हो जाए। आत्मा का जीवन, आत्मा की यात्रा वहीं स्तंभित रह जाती है, वह मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकती। तो आइए, जब मैं ये गुरु अष्टकम आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, आप धन्यवाद कीजिए उस आदि गुरु, उस महादेव को कि आपको मनुष्य जीवन मिला। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनिलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेताद्निजातं मनश्चेनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेनलग्नं
किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्निलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं शमन्माण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्निलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्निलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगेन योगेन वा वाजिराजो न कान्ता सुखेन विवित्तेषु चित्तं मनश्चेन्निलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्येन वा स्वस्य देहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्निलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूतविर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् भो शम्भो शिव शम्भो शयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो 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 गङ्गाधर शङ्कर करुणाकर
शिव शंभो स्वयंभो। निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूपा गम गम भूत प्रपंच रहिता। निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूपा गम गम भूत प्रपंच रहिता। निज गुण निहित नितांत अनंत। निज गुण निहित नितांत अनंत। आनंद अतिशय अक्षय लिंग। आनंद अतिशय अक्षय लिंग। ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। दिमित दिमित दिमि दिमि खिट खिट तोम तोम दिमि खिट तारे खिट खिट दिमित दिमित दिमि दिमि खिट खिट तोम 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 दिमि खिट तारे खिट खिट तोम। मतंग मुनिवर वंदित ईशा। सर्व दिगंबर वेशित वेशा। मतंग मुनिवर वंदित ईशा। सर्व दिगंबर वेशित वेशा। ईशा सबेशा सर्वेशा भो। शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो। शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। शिव शंभो स्वयंभो। शिव शंभो स्वयंभो। शिव शंभो स्वयंभो। अब याद करते हैं भगवान शिव को उनके अनेकों नामों से। सर्वेश सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः। महादेवाय नमः।
योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः योगेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः सॉरी महादेवाय नमः। मैं भर जाती हूँ भगवान शिव से जब उनका नाम याद करती हूँ, माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी विनम्र हो गई हूँ। अब अंतिम पाठ शांति पाठ गाते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सभी साथ गाइए। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सभी स्वस्थ रहें। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सबको शांति प्राप्त हो। सर्वेषां पूर्णं भवतु, everybody feels complete। सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। It's the last time, please everybody chant together. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। May we all feel complete. सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। Come on everybody. सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां Thank you. उठने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपनी पूरी टीम का। ये हैं दर्शन जी मेरे हमारे सिंथेसाइज़र पे, दीपक जी तबला पर एंड रमेश जी पैड पर। और जो 2 बार मैं थोड़ी इमोशनल हुई वो मैं अपनी मदर को देखकर हुई और अभी भी हो रही हूँ। Thank you for your blessings, Mom and Dad. सचमुच कला के रंगों में वह जादू है जो रंगने वाले, भीगने वाले और देखने वाले तीनों के दिलों को भाव विभोर कर देता है। तभी तो देखिए सारा वातावरण शिवमय हो गया। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगली प्रस्तुति को देखने। नृत्य और नाटक का परस्पर अभिन्न संबंध है। नाट्य नृत्य का विकास इसी आधार पर हुआ है। आज हमारे देश में नाट्य नृत्य की जितनी कलाएं विकसित हैं उतनी अन्यत्र दुर्लभ हैं। नृत्य नाट्य के द्वारा हमारे कलाकार हमारे देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का ऊंचा और अमर गान गाया करते हैं। कला में ऐसी सम्मोहिनी है जो सबको बरबस अपनी ओर खींच लेती है।
इतना आकर्षण है कि हम अपने तनाव को भूल उसमें डूब जाते हैं। ऐसे ही मनोहारी, आत्मविभोर कर देने वाली एक प्रस्तुति जिसका मंचन प्राचीन कला केंद्र के सदस्य नृत्य नाटिका के रूप में हमारे सम्मुख करेंगे। यह नाटिका आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा संकल्पित आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 नामक महायज्ञ में एक आहुति मात्र है। यह एक माध्यम है भारत और भारतीयों को अपनी स्वर्णिम संस्कृति से साक्षात्कार कराने का और उन्हें अपनी प्राचीन परंपरा एवं मान्यताओं के प्रति उद्गार व्यक्त कराने का। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से एक बार पुनः भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर, जो कि वर्तमान प्रगति की चुनौतियों का सामना करते करते शायद कहीं धूमिल हो रही है, को प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, ताकि उनमें एक नवीन ऊर्जा एवं नव शक्ति का संचार हो और इंडिया एक बार फिर भारत बनने के लिए तैयार हो। यह प्रस्तुति जो आप देखेंगे वह है भारत अमृत महोत्सव। कथक शास्त्रीय नृत्य में निबद्ध इस नृत्य नाटिका की संकल्पना एवं नृत्य निर्देशन किया है विदुषी डॉक्टर समीरा कौसर जी ने, जो एक प्रख्यात कथक नृत्यांगना है। जिस तन्मयता और निपुणता के साथ इस कला को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को आप प्रशिक्षण देती हैं, वह प्रशंसनीय है। इस नृत्य नाटिका की संगीत रचना की है पंडित माधव प्रसाद जी ने। प्रकाश संयोजन डॉक्टर करण गुलजार का है और इस नृत्य नाटिका को प्रस्तुत कर रही हैं प्राचीन कला केंद्र की 16 छात्राएं। भारत माँ की महिमा का बखान एवं उनकी आराधना हमारा परम सौभाग्य है।
परंतु भारत के स्वर्णिम इतिहास का अवलोकन कर गौरवान्वित होने के साथ साथ हमें वर्तमान भारत की यथार्थवादी स्थिति एवं भावी संभावनाओं के विषय में भी विचार विमर्श करना है। हम कहाँ थे, कहाँ हैं और हमें कहाँ होना चाहिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका संबोधन कर हम सबको समय रहते प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम। प्रकट्यसुरम्यं विशालं प्रकामम्, प्रकट्यसुरम्यं विशालं प्रकामं, सरितार्हारे ललालं निकामं, प्रकट्यसुरम्यं विशालं प्रकामं, सरितार्हारे ललालं निकामं, हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिन्धु, प्रियं भारतं तत् सर्वथा दर्शनीयम्। अनेके प्रदेश अनेके च वेशः, अनेकानि रूपाणि भाषानेका, परं यत्र सर्वे वयं भारतीय, प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं, प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम्। तत्
प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितार्हारे ललानं निकामं हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं तत् सर्वथा दर्शनीयम् प्रियं भारतं तत् सर्वथा दर्शनीयं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं तत् सदा भारतीय सभ्यता के अनुसार माँ दुर्गा को समस्त शक्ति का स्रोत माना जाता है। उसी माँ दुर्गा के अंश को जब कोई स्त्री अपने गर्भ में धारण करती है तो उसका स्वागत तो क्या, हम उस नन्ही सी जान की हत्या तक करने से पीछे नहीं हटते। और यदि वे जन्म ले भी लेती है तो उसे लिंग आधारित भेदभाव, घरेलू हिंसा, सामाजिक वहशत जैसी न जाने कितनी चुनौतियों का सामना जीवन के हर पड़ाव में करना पड़ता है। बसंत ऋतु की पहली फुहार में सराबोर मदमस्त पवन सी सुगंधित यौवन की दहलीज पर खड़ी किसी तितली ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ क्या घटित होने वाला है। गगन पवन आए पुरवाए सकल बन गगन पवन आए पुरवाए आए ऋतु बसंत आए ऋतु बसंत आए छाई पुरवाए 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 सकल 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 बन गगन पवन आए पुरवाए आए पुरवाए
डार डार अंबुवन पे कोयलिया, हाँ डार डार अंबुवन पे कोयलिया, रही पुकार रही पुकार रही पुकार। और अम्बुआ बूंदन भर लाए, और अम्बुआ बूंदन भर लाए, और अम्बुआ बूंदन भर लाई। हाँ सकल बन गगन पवन, आए पुरवाई आए पुरवाई आए पुरवाई आए पुरवाई। सकल बन गगन पवन,
ऐसी ऐसी दुखदाई घटनाएं रोजाना घट रही हैं जिन्हें देखकर गर्दन शर्म से झुक जाती है कि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां बच्चियों का सामूहिक बलात्कार कर उन पर तेजाब फेंक निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं। क्या यही है हमारे समाज का सच? निर्भया, आसिफा जैसी और न जाने कितनी बेटियों का निरादर हुआ और हर पल हो रहा है। उनकी शारीरिक एवं सामाजिक पीड़ा से कहीं भयानक है उनका मानसिक उत्पीड़न, उनका जर्जर हुआ अंतःकरण जो मुट्ठी भर दरिंदों की क्रूरता का शिकार हो लहू लुहान है, विहीन भावना से ग्रस्त, कभी स्वयं को तो कभी परिस्थितियों को दोषी ठहरा भावनाओं के तूफान में डूब कर रह जाती हैं। हमें समाज द्वारा शोषित सिसकते हुए माँ दुर्गा के इस प्रारूप यानी नारी को आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित कर हमारे परिवारों में माँ दुर्गा जितना ही सम्मान दिलाना है। तभी हम माँ दुर्गा की आराधना करने की आर्द्रता पा सकते हैं, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां के पूर्वज कहते थे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
हमारे वेदों में गुरु को ईश्वर के समान माना जाता है, क्योंकि लक्ष्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है उस तक पहुंचाने वाला माध्यम, यानी हमारे आदरणीय गुरु। कोटे नमन गुरु चरणन पर पायो जित ते ज्ञान गुरु कृपा सु विद्या गुरु कृपा सो मान गुरु ही पथ को राखन हारो गुरुदेवन सो महान गुरुदेवन सो महान गुरुदेवन सो महान। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरे बंदो गुरु पद कृपा सिंधु रूप हरे महामोहतम पूज्य जासु महामोहतम पूज्य जासु वचन रवि कर निकट बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु रूप हरि।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गिन्नक तुमकिटदा कृददिटदा कत्तिट गिगतिट तुमकिट कृददिट कत्तिट गिगतिट तुमकिट कृददिट कत्तिटदा कत्तदा कत्तिटदा कत्तदा कत्तिटदा कत्तदा ता कत्तिटदा कत्तदा कत्तिटदा कत्तदा कत्तिटदा कत्तदा ता कत्तिटदा कत्तदा कत्तिटदा कत्तदा कत्तिटदा कत्तदा ता। भारतीय संस्कृति एकलव्य और कर्ण जैसे आदर्शों से भरी पड़ी है, जो गुरु के एक इशारे पर गुरु दक्षिणा में अपना कला कौशल, यहां तक कि अपने प्राण तक अर्पित करने में क्षण भर का अवलंब नहीं करते थे। ऐसी थी हमारी गुरु शिष्य परंपरा। परंतु दुख की बात है कि समय के साथ साथ ये लुप्त होती जा रही है। अब प्रश्न ये है कि वैसे गुरु और वैसे शिष्य आज कहां हैं? धरती मां आज भी हर दिन हर पल न जाने कितने रत्नों को जन्म देती है, परंतु अफसोस धरती मां के ये रत्न यानी हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी विदेशों में जाकर बसना अपना सौभाग्य समझती है, और भारत मां अपने रत्नों की चमक और अपने बीजों से बने वट वृक्षों की छाया से आज भी वंचित है। सानी नीधा धामा मागा गसा सानी हरिसा सागमा सागमा गामा धा गामा धा मादानी मादानी दानी सा हरिसा सागमा गामा धा मादानी दानी सा गेरिसा सानी धामा गामा दानी सा गामा दानी सा गामा दानी सा सानी धामा गामा दानी सा गामा दानी सा गामा दानी सा सानी धामा गामा दानी सा गामा दानी सा गामा दानी सा। Maga gasa sani harisa maga gasa sani harisa 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 saga ma gamada harisa harisa saga ma gamada harisa harisa saga ma gamada harisa gamada harisa ni da ma gasa ni harisa harisa gamada harisa ni da ma gasa ni harisa Ni sa ga ma da ni sa ni da ma ga sa ni da ni sa da ni sa ga ma da sa sa ni da ma ga re sa da ni sa ga ma da sa sa ni da ma ga re sa sa ga ma da ni sa ga re sa ni da sa ga ma da ni Madani sa gere sa ni da sa ni da ma ni da ma da ma gere ani sa ga ma da ni sa ni da ma ni da ma da ma gere sa da ni sa ga ma da sa ni da ma gere sa da ni sa ga ma da sa ni da ma gere sa ni da ma ni da ma ga ma ga sa ni sa ni da ma ni da ma ga sa ni sa ga ma ga ma da ma da ni da ni sa ga ni sa
ni sa ga sa ga ma ga ma da ma da ni da ni sa ga ni sa ni da ma ga sa ni sa ga sa ga ma da ni sa ga sa ga ma ga ma da ni ga ma da ni sa ga ma da ni da ni sa ga ni sa ni da sa ni ga ma da ni sa ga ma da ni sa ga ma da ni sa. भारत की तुलना में विदेशों का जीवन स्तर भले ही ऊंचा हो, सुख सुविधाएं और जीवन की गुणवत्ता भले ही अधिक हो, परंतु मैं पूछती हूं, यदि अपनी मां निर्बल हो, रोगग्रस्त हो, अक्षम हो, तो क्या हम उसे छोड़कर किसी स्वस्थ एवं खुशहाल मां के पास चले जाते हैं? आज भी हमारे समाज में विदेशों में बसना सबसे बड़ी उपलब्धि क्यों मानी जाती है? समाज की यही मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। क्यों हम यहीं पर रहकर भारत को और सशक्त एवं सक्षम कर उन्नति के शिखरों तक नहीं ले जा सकते? रास्ता मुश्किल है, परंतु नामुमकिन नहीं। जरा सोचिए। Sani sani da ma ga ma ni da ma ga ma ga sa re ni re dhani sa ga ma da sani da ma ga ni da ma ga re sa ga ni dha sa ga ma da ni sa ga ma da ni re sa Gamadani madani sare magare sani da madha sa tadim tere na tadim tere na tadim tere na tadim tere na udeni dim tanana udeni dim tanana Derena, de tadim, derena, tadim, derena, tadim, derena, tadim, derena. Tat hey, tat hey, tadi, tat hey, tat hey, tat hey, tat hey. Tadim, derena, tadim, derena, tadim, derena, tadim, derena. Tag dum get tag kata kata gina da ta da da get tag dum get tag kata kata gina da ta da ta na de re ta na de re ta na de re ta na de re ta na yeli ta dim ta de re na yeli ta dim ta de re na dim tarana 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 tana dim tana de re na tana de re na tana de re tadim dim tana de re na tana de re na tana de re tadim dim tana de re na tana de re na tana de re tadim dim. एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है देश की सुरक्षा।
हमें गर्व है अपने जवानों पर, जो पिछले न जाने कितने वर्षों से अपनी जान की बाजियां लगाकर अपने परिजनों से दूर विषम परिस्थितियों में रहकर भी निरंतर निर्विघ्न भारतीय सीमाओं की रक्षा करते आ रहे हैं। दुश्मन से नहीं डरता, दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मारू की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। सहजून की ज्वलंत ज्वाला कहूँ है सर्दी कम, शरद की ठंड पी कहूँ गर्मी का है मौसम। वह दफन 9 दिन बर्फ में जिंदा निकलता हूँ, सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ, टुकड़ों में भरता हूँ, टुकड़ों में भरता हूँ। लहरों में सागर की मैं डूब कर भी लड़ता हूँ, रख बंदूक कांधे पर बर्फ में टहलने निकलता हूँ।
दिवाली में उजाले का मुझे ख्याल तक नहीं, और होली में रिश्तों का कहीं गुलाल तक नहीं। ईद पर भी चांद मेरी ईद नहीं लाता, बांधने राखी भी एक लिफाफा है आता, लिफाफा है आता। हाँ, गोदी में माँ के सिर रखे कई बरसों गए, पिता मेरी प्रतीक्षा में प्रलोक को गए। बीवी सिंदूर लगा के भी दिखती कुंवारी है, जिंदगी की मैंने हर जरूरत नकारी है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं भारत का जवान हूँ, मैं भारत का जवान हूँ। धात्रक दूंगा धागे दींग धा धादिंता दिता किड़दा धक्का दूंगा धकिटे तका धकिटे तका धकिटे तका धकिटे कता धात्रक दूंगा धात्रक दूंगा धात्रक दूंगा धा गे धींग ता धागे दिंग ता धागे दिंग ता धा दिंग ता धागिंता धागिंता दित्ता केड़ धा दित्ता केड़ दा दित्ता केड़ दा तक्का दूंगा तक्का दूंगा तक्का दूंगा ता की ट क ता ता के ट क ता तकिट कता तिटक तक दिगिन धा तिटक तक दिगिन धा तिटक तक दिगिन धा 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 तिटक तक दिगिन धा तिटक तक दिगिन तिटक तक दिगिन धा 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 तिटक तक दिगिन धा तिटक तक दिगिन धा तिटक तक दिगिन धा 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 धा।
मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ, हाँ मैं डरता हूँ। नफरती आग ओढ़े मजहब के चोरों से, सियासती संगीन सांपों के सपोलों से, हवाई अफवाह और सैलाब जुमला से डरता हूँ। डर है मेरी ज़मीं को मेरे अपने उजाड़ेंगे, अपने उजाड़ेंगे, और खून सनी कुर्सी से खुद को सवारेंगे। मैं मजबूर, मैं कमजोर, उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक ताने बढ़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक ताने बढ़ नहीं सकता। मैं सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन में पहरा दो। सरहद पे खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो, पहरा दो, पहरा दो, पहरा दो। सुनो आवाज मन की, तुम जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कि कोई अपना पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को तोड़ के, कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की। जुड़ो ऐसे जड़ों से जिंदगी की जान कहलाओ। पहाड़ी वादियां मैदान साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से बने दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण ये प्रण ले, सड़क पर खून ना होगा। प्रेम परस्पर प्रेम और बस प्रेम ही होगा। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the end of day. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थोड़ा कुछ परिवर्तन आया है, परंतु बहुत कुछ अभी बाकी है। बन अबला नारी ने
शोषित हो पीड़ा बहुत सही। नव भारत की सीता है, लक्ष्मण रेखा स्वयं ही खींच रही। नव शिक्षा प्रणाली लिए हर गुरु बोस, भगत सिंह और शिवा की गौरव गाथा पढ़ा रहा। सारा गढ़ी के बिसरे बलिदानों को याद दिला रहा। देखो देखो, हमारा भारत एक बार फिर विश्व गुरु होने जा रहा। मातरम 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 मातरम। जयतु मातरम, जयतु मातरम, जयतु मातरम, जयतु मातरम, मातरम मातरम भवतु मातरम, मातरम मातरम भवतु मातरम। शक्ति युक्ति संभ्रतं भवतु मातरम, शास्त्र शस्त्र धारकं भवतु मातरम, शक्ति युक्ति संभ्रतं भवतु मातरम, शास्त्र शस्त्र धारकं भवतु मातरम। रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं, कर्म धर्म नौष्टिकं भवतु भारतं, भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतं, विश्व भारं तारतं 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 भवतु भारतं, भारतं भारतं 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 भवतु भारतं। जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। जयतु जयतु भारतम्, जयतु जयतु भारतम्, विश्व
विश्व प्रेम की ओर चदरिया जागा हुआ भारत है ये। That was truly an enthralling and inspiring performance, a reminder for all of us to ensure that we restore and preserve our culture and traditions to their former splendor. Ladies and gentlemen, I'm pleased to inform you that our chief guest arrived a little while ago. On behalf of Infosys Foundation Bengaluru and Bharatiya Vidya Bhavan, I extend a warm welcome to our Chief Guest, His Excellency Shri Banwarilal Purohit, Governor Punjab and Administrator UT Chandigarh. To invoke the blessings of the Almighty, I request our esteemed Chief Guest, His Excellency Shri Banwarilal Purohit, Chairman Shri R.K. Sabu, Guests of Honor Shri K.G. Raghavan, Shri Samir Goyal, and our other distinguished guests to kindly come and light the lamp. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् संध्यादीप नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। संध्यादीप नमोस्तुते। 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 Thank you, sirs, ma'am. We are indeed privileged to have amongst us today His Excellency Shri Banwarilal Purohit, Governor Punjab and Administrator UT Chandigarh. Shri Purohit is one of the most eminent and senior political stalwarts of our nation, with prolific experience in politics and governance of over 4 decades. A 3-time Lok Sabha member from Nagpur, he was also the managing director of the Hitvada, a leading English daily founded by Gopal Krishna Gokhale, the mentor of Mahatma Gandhi ji. An eminent educationist, a renowned social activist, institution builder, and a committed nationalist, His Excellency adroitly fulfilled all his responsibilities as Governor of Assam, with additional charge of Meghalaya, and then the Governor of Tamil Nadu.
His Excellency was then appointed as Governor Punjab and Administrator UT in August 2021. Beginning his political career with winning the assembly elections from Nagpur and then as a member of parliament from Nagpur Lok Sabha constituency for 3 terms, Shri Purohit was also adjudged as the most active parliamentarian with the highest number of questions to his credit. Preferring a Spartan lifestyle and simplicity, Shri Purohit has always remained a leader loved by the masses. Our esteemed chief guest is also associated with numerous social, charitable, religious and sports organizations and has generously donated for the cause of education and social work. In particular, he is the National Trustee and Vice President of Bharatiya Vidya Bhavan, one of the premier societies running more than 250 educational institutions across the globe. Besides this, His Excellency was the chairman of Shri Ramdeo Baba Samarak Samiti and the Women's Education Society, both of which run some of the most reputed colleges in Maharashtra. It is indeed a great honor to have you here with us and Your Excellency, and we believe that this event would not have been complete without your august presence. I now request our respected chairman, Shri R.K. Sabu, to felicitate our chief guest, His Excellency Shri Banwarilal Purohit, Governor of Punjab and Administrator of UT Chandigarh. Thank you, sirs. I now request our chief guest, His Excellency, to kindly come on stage to felicitate the artists who performed on stage today. I also request Shri R.K. Sabu, Chairman Chandigarh Kendra, Shri R.G. Raghavan, Chairman Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra, Shri Sameer Goyal, Head Infosys Mohali, Shri Jagesh Khaitan, Vice Chairman Chandigarh Kendra, Shri Manmohan Singh Kohli, Chairman Cultural Committee, and Shri Mr. Madhukar Malhotra, Secretary Chandigarh Kendra, to kindly join His Excellency on stage. Thank you, sirs. And now I call upon stage the enchanting chanters, Miss Geet Rao, and on behalf of her team, to kindly come on stage and accept the memento. A round of applause, ladies and gentlemen, for this enchanting chanter. Next, please welcome Dr. Sameera Kosar on behalf of her amazing team and the beautiful ensemble of Amrut Bharat Manthan. Dr. Sameera Kosar. A big round of applause for the beautiful depiction of Amrut Bharat Manthan. Thank you, sirs. I now request His Excellency Shri Purohit to kindly come and address this audience.
श्री आर के साबू जी, चेयरमैन भारतीय विद्या भवन चंडीगढ़ केंद्र, श्री के जी राघवन जी, चेयरमैन भारतीय विद्या भवन बेंगलुरु केंद्र, श्री समीर गोयल जी, इज इंचार्ज ऑफ इन्फोसिस चंडीगढ़ केंद्र, श्री मनमोहन सिंह कोहली जी, चेयरमैन of Cultural Committee, Bharatiya Vidya Bhavan, Chandigarh, and invited guests and dear friends. Sorry, actually as per the program I was supposed to stay here for 2.5 hours. But because of some very, very important meeting which I could not avoid, so I was delayed. But I told Sabuji, come what may, even I will come for 10 minutes. 5 minutes, no problem. And I came, that cultural program was going on. What a wonderful program. I congratulate all the three. ये त्रिमूर्ति बैठे हैं ना सामने, साबू जी चेयरमैन चंडीगढ़ केंद्र, फिर राघवन जी चेयरमैन बेंगलुरु केंद्र, और फिर इन्फोसिस के यहाँ के चीफ, ये त्रिमूर्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने एक शानदार कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है चंडीगढ़ वालों के लिए, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। जरूरत थी कल्चरल, मेरी स्पीच तो मैं रखता हूँ शॉर्ट में, कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से पूरा देश एक होता है। हमारे देश की हम बात करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत महान महान तो है, अपने अपने इलाके में महान नहीं रहना है, पूरा भारत एक है, ये विश्व को दर्शन आना चाहिए। और देखने के लिए तो मन से, कला ही एक माध्यम है, विभिन्न कलाएं हर जगह के अलग अलग, कितना फर्क है। साउथ का भरतनाट्यम, गुजरात का गरबा और पंजाब का भांगड़ा, तीनों की अलग अलग कलाएं। और जब कलाकार मिलकर यदि हम देखें ना, तब हमारे भारत की विशालता हमें मालूम होती है। और हमारी तो भारत की महान संस्कृति रही है, कल्चर के ऊपर हमारी कल्चर बहुत पुरानी है, भारत की महान संस्कृति है, विश्व में सबसे पुरानी होगी, 5000 वर्ष पुरानी तो है, वेदों के जमाने से। वेद भी कम से कम 5000 वर्ष के मानते हैं कि 5000 वर्ष के पहले वेद लिखे थे। इतनी संस्कृति आज भी कायम है, देखो क्यों। हमारी संस्कृति, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म के ऊपर आधारित है, द रिलीजन, सभी को एक मानते हैं। इसीलिए उस जमाने में, रामायण महाभारत के जमाने में, द्वापर त्रेता, अभी हम कलयुग में हैं, पर आखिरी महाभारत में कुरुक्षेत्र में भगवान ने जो गीता का संदेश दिया अर्जुन को, वो कलयुग के लिए दिया। द्वापर का फैग एंड था, कलयुग की शुरुआत थी। महाभारत युद्ध खत्म होते ही इमीडिएट उसके बाद में कलयुग आ गया। तो ये संदेश जो दिया था गीता का, उनको मालूम था भगवान श्री कृष्ण को कि कलयुग आएगा, कलयुग में क्या क्या होगा, उनको ठीक से रखने के लिए, उनकी बुद्धि ठीक से रखने के, आचरण युग को ठीक रखने के लिए गीता हमारे लिए महत्तम है, गीता का संदेश। इसलिए गीता का संदेश उस जमाना भी महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है गीता का संदेश हमारे लिए। और बच्चों के लिए खासकर ग्रूम करना है, चरित्र निर्माण पर जोर होना चाहिए। कला भी एक माध्यम है उसमें, चरित्र निर्माण करने में।
कला बहुत बड़ा माध्यम है। अभी जो जहाँ देखा हमने, कलाकार कितनी मेहनत करते हैं, कितनी सुंदर प्रस्तुति थी, मन जीत लेते हैं ये कलाकार लोग। अभी खाली 2 कलाकारों का हमने अभिनंदन किया है, पुरस्कारित किया है उनको, उनको मेरी बेस्ट विशेज है। भारतीय विद्या भवन का तो मेन है, स्थापित हुआ था 1938 में भारतीय विद्या भवन, के मुंशी जी ने शुरू किया था। 5 लोग जमा हुए थे शुरू में। चिंता थी कि हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, हमारी संस्कृति पर हमले बहुत हुए ना, गुलामी में रहे, मुगलों ने हमले किए, अंग्रेजों ने हमले किए, संस्कृति को खत्म करने के प्रयत्न हुए, पर संस्कृति टिकी है ना। जड़ है धर्म, धर्म को हमको हरा भरा, उस जड़ को हरा रखना है। उसमें कला का माध्यम, शिक्षा का माध्यम, चारित्र निर्माण, एजुकेशन, ये बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। भारत की महान संस्कृति यदि दिया है, उसका दर्शन तो गांधी जी के जीवन में देखो। गांधी जी का जीवन कितना सिंपल लिविंग होना चाहिए। इफ द लिविंग इज सिंपल ना, तो किसी बात की कमी नहीं होगी, समाज की सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। द मोमेंट एवरीबडी डिसाइड टू लीड ए सिंपल लाइफ, नेसेसिटीज लिमिटेड हो जाती है ना। महात्मा गांधी ने तो साउथ में ही अपने कपड़े उतार दिए थे, अंग वस्त्र नहीं रखा, खाली एक ओढ़ने का एक जरा सा एक डाल के रखते थे। क्यों? कि सबको मिलना चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, देखा देखी ना हो। महात्मा गांधी ने कहा है, गॉड हैज गिवन एवरीथिंग फॉर द नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। महात्मा गांधी ने कहा, लालच की तो सीमा ही नहीं, लालच नहीं, सिंपल लिविंग रही। यही हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है। टीचर्स भारतीय विद्या भवन में बहुत अच्छे हैं। पूरे इंडिया में भारतीय विद्या भवन की जितनी भी ब्रांचेज है मैंने देखा है, एंड आई थिंक आवर टीचर्स शुड बी प्राउड। बाकी हम देखते हैं दूसरी जगह टीचर सेलेक्ट होते हैं, किसी की सिफारिश से हो जाते हैं। भारतीय विद्या भवन के जितने भी केंद्र है वो प्योरली ऑन मेरिट, इसलिए भारतीय विद्या भवन के शिक्षक सीना तान के चलते हैं। सबको मालूम है कि किसी के सिफारिश से नहीं गए, पैसे से नहीं गए, कुछ नहीं है, ये अपने मेरिट पे सेलेक्टेड है। इसीलिए तो भारत विद्या भवन आगे बढ़ रहा है। हर जगह, हर स्कूल, शिक्षा के केंद्र जहाँ है वहाँ पर यही प्रॉब्लम, एडमिशन की। साहू जी के यहाँ मेरे को 2 फ़ोन करने पड़े, गवर्नर बन के आया, बोले साहू जी के स्कूल में करा दो भारतीय विद्या भवन में। भाई फ़ोन करता हूँ, जगह हो गई तो। साहू जी भी तो मेरिट पे चलने वाले हैं। देखिए अभी तो नहीं है, पर जो फर्स्ट में वेटिंग में डाल देते हैं, ये खाली होगी जगह तब देंगे। ओके मैंने कहा ठीक है तब दो, लग जाएगा महीने 15 दिन में नंबर। मैंने कहा तू वेट कर, लगेगा तेरे को एक न एक खाली होगा। तो ये उस समय मैं कह रहा था, भारत की जो संस्कृति पे जब हमले हो रहे थे तब के.एम. मुंशी साहब ने, उसमें सरदार पटेल भी थे भारतीय विद्या भवन से जुड़े, इन लोगों ने तय करके, 5 लोगों ने जमा करके कि हमको संस्कृति बचाना है, भारतीय विद्या भवन स्थापन हुआ। 5 लोग, 25,000 की कैपिटल से शुरू हुआ ये केंद्र, आज वटवृक्ष है। ऑलमोस्ट 300 ब्रांचेज हैं, सब स्कूलों में मिला जाए 17,000 टीचर्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्ट फिगर आई डोंट रिमेम्बर टुडे, गलत बोलना नहीं चाहिए, गवर्नर के मुंह से गलत नहीं निकलना चाहिए। तो मैं जब सही जितना बता रहा हूँ, भारतीय विद्या भवन में डेडिकेटेड टीम है हर जगह की। चंडीगढ़ केंद्र के मैं सब मिला है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ऑल आर डेडिकेटेड अबव बोर्ड। एक ही है, राष्ट्र को सुधारना है, विश्व गुरु बनाना है। इन्फोसिस का भी साथ है। भारतीय विद्या भवन के जहाँ जहाँ काम है लगिए, आपके मदद करिए, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और भी जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं
यहाँ है. And one thing is important, everywhere there is a total transparency in the working of the Bharatiya Vidya Bhavan. Take it from the accounts to everything. No underhand dealing, nothing. This is the ideal institutions. And I think those who are the members associated with it in any form, I think they should be proud of it. That they are members of such a esteemed organization, a reputed organization. Those who are attached, Bhavan treat them as their family members. बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार भारतीय विद्या भवन का. टीचर्स हो गए, आप मेंबर हो गए परिवार के. यहाँ रिलेशन नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का. इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. यू बिकम द मेंबर ऑफ दिस बिग फैमिली है, एंड यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. सो माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू. भवन बहुत अच्छा केंद्र कर रहा है साहू जी, आपकी टीम को बहुत बहुत देता हूँ. एंड सेकेंडली मिस्टर राघवन इज हियर, ही चेयरमैन ऑफ बेंगलोर केंद्र. When I was governor Tamil Nadu before coming over here, I was transferred from Tamil Nadu to Punjab, and I don't know from here they might transfer or not. Prior to that, coming to Tamil Nadu, I was governor of Assam, Meghalaya. Then I came over here. So I visited that camp, attended one of the program. What a wonderful! They are running so well. I was chairman of Nagpur Kendra for some time. I started in 1984. At Nagpur Kendra. Today there are 6 schools, around 17,000 students. They are in Nagpur Kendra. And class 1 structures and everything. They are managing wonderfully well. Since last 6 years I became the governor, I am not connected with them. But the team is so wonderful. They are doing wonderfully well. Wonderfully well. And there, आपका देन है, बेंगलोर केंद्र का. हमारा कला सर्जन है, दैट इज कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नागपुर कला सर्जन. एंड माडखोलकर मैडम, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर बेंगलोर केंद्र. शी इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट कला सर्जन. बहुत एक्टिविटीज होती है, स्टेडियम बहुत अच्छा है वहाँ भी बहुत. सो माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, ऑल द टीचर्स, कीप इट वेल. ये काम Bhavan's work is, slogan is, Bhavan's work is God's work. Remember always in your mind, गलती होगी नहीं. Everybody should be religious. Religious I mean to say, सोने के समय दिन भर तो हम इतने बिजी रहते हैं, इतना काम करते हैं, फुर्सत नहीं परिवार का, यूँ त्यों बच्चों को देखना, यूँ तो सब देख के. सोते समय एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स भगवान को याद करो. हिंदू हैं, गीता के श्लोक याद होंगे तो वो बोलिए. रामायण की कुछ चौपाई हो तो बोलिए. हनुमान चालीसा पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम, गायत्री मंत्र. 2 मिनट भगवान को थैंक्स. सिख हैं, गुरुवाणी को करके सोइए, भगवान को थैंक्स दीजिए. क्रिश्चियन है, बाइबल की हिम्स होंगी, बाइबल के हिम्स याद करके गाइए, थैंक्स दीजिए भगवान को, सो जाइए. मुस्लिम है, कुरान की आयत होंगी. कुछ न कुछ भगवान में विश्वास रखने से देर गलती नहीं होती ना. ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, देयर आर वीकनेसेस. समटाइम्स व्हाट हैपन, बहुत स्टेज चल रहे हैं, मन जरा डोल गया, यार कोई देख तो नहीं रहा है ना, कर डालो. बट इफ यू हैव फेथ इन द गॉड, अंदर से आवाज़ आएगी, अरे और कोई नहीं देख रहा, वो ऊपर वाला देख रहा है. गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी, ये मैं दावे से कहता हूँ. ओनली 2 थिंग्स, बी रिलीजियस, लीड सिंपल लाइफ एंड स्ट्रेट. टोटल ट्रांसपेरेंसी इन द लाइफ, टोटल ट्रांसपेरेंसी. एवरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ तक हो, नॉट ओनली ऑन द वर्क. भारतीय टीचर्स है, भारतीय विद्या भवन के स्कूल में आए, देन ओनली ट्रांसपेरेंसी. दैट इज नॉट एनफ. पूरे परिवार में मालूम होना चाहिए कि आप इसमें कहाँ पर हैं. एंटायर फैमिली शुड नो. इवन योर हस्बैंड, इवन जेंट्स आर हियर. इफ यू गो टू द क्लब, दैट इज नॉट ए गुड हैबिट, बट परंतु यदि जाते हैं तो योर फैमिली शुड नो दैट वेयर यू आर, ऑन विच क्लब, एट विच टेबल यू आर सिटिंग. सारी फैमिली को मालूम होना चाहिए. छिपा के कोई काम नहीं है.
ट्रांसपेरेंसी लाइफ में रही, क्योंकि गलती होगी तो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, बोलेंगे भाई ये दारू वारू पीना बंद करो, मर जाओगे, हैं, गलत काम है। कोई बोलने वाला तो होगा, छिपके करोगे, किसी को मालूम नहीं होगा, कोई बोलेगा भी नहीं ना, हैं, अपनी हेल्थ खराब हो जाएगी, हैं, कोई सवाल नहीं। सादा जीवन, सादा खाना, सादा रहना, लाइफ। मैं एट ए कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इन द मॉर्निंग आई कोटेड समवेयर ये Tibetan proverb. That was in the morning I quoted, and I quote everywhere. Sabuji, if you want to live longer, if you want to complete the century, what is to be done? Formalize with me. Tibetan proverb. That is number 1. Eat half. Eat half. Walk double. Laugh triple. And love without measure. That is the secret of the success. So my best wishes to all of you. साबू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया, और आप सबको भी इतना देर होने के बाद में भी आपने हमारा इंतज़ार किया, 2 बातें सुनी। मेरी 2 बातें जो मैंने कही है याद रखिए हमेशा, ये कान से सुन के ये कान से निकाल देना नहीं, अंतःग्रहण करिए। महत्व की बातें बोल के जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय विद्यामान आपका है, आप उसके परिवार के सदस्य हो, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ देर इज़ नो रिलेशन इन भारतीय विद्यामान और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज। वी आर द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, और हमको हमारी ड्यूटी करना है, उस हिसाब से आप ड्यूटी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इसी आह्वान के साथ मेरे शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद। We are truly thankful to His Excellency for his indeed very inspiring words of wisdom. I now request our esteemed Director Education cum Senior Principal, Mrs. Vinita Arora, to kindly give the vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. This evening has been a delightful and divine one, thanks to the wonderful performances that have broken ground for the week-long art festival. One that is truly a first of its kind event for all of us in Chandigarh. This would not have been possible without the immense support and groundwork put in by many whom I would like to thank today. First, I would like to extend our immense gratitude to His Excellency, Governor Punjab and UT Administrator, Shri Banwarilal Purohit ji, for gracing us with his honorable presence. We are humbled by your support, sir, and truly thankful that you accepted our invitation at such short notice. Please accept once again our gratitude, sir, for having made it here in spite of your heavy commitments today. My heartfelt gratitude to Infosys Foundation Bengaluru and Mr. Sameer Goyal, Head Infosys Mohali, for sponsoring this outreach program and making all this possible. We are also deeply appreciative of the gracious kindness of Shri K.R. Raghavan, Chairman Bharati Vidya Bhavan Bengaluru Kendra, and other members of the Bengaluru Kendra who are here today for their meticulous support right from the initial stages and for setting the stage for this extraordinary event to unfold. The idea of giving a voice to the countless artists across the country is indeed a noble one, and it is that idea that sparked the beginning of all the good things that followed. I am forever grateful to the chairman and guiding mentor of the Chandigarh Kendra, Shri R.K. Sabu, for being our pillar of support in this endeavor and always. We are also deeply appreciative of Mr. Manmohan Kohli, chairman of the Cultural Committee, for giving this event a vision and being our tower of strength all along the way. Gratitude to Ms. Neenu Vich,
member of the organizing committee for this event, for her inventive inputs, meticulous direction, and attention to detail. All of this would not have been possible if not for the perceptive and astute direction of our Honorary Secretary, Mr. Madhukar Malhotra, who has been our anchor as we set out on this remarkable mission. The stars of the evening, the artists who put up scintillating performances, are deserving of our wholehearted appreciation. I would be failing in my duty if I did not address the contributions of the teachers of the three schools, the senior wing, our junior school, and the new Chandigarh branch, led ably by principals Ms. Inderpreet Kaur, Ms. Soma Mukhopadhyay, and Vice Principal Mrs. Suparna Bansal. Last but certainly not least, I would like to thank members of the audience and all our distinguished guests for gracing this evening and making it a huge success. Your support has been gratifying and has brought all the effort we have put into it to fruition. Thank you so much. I now request the audience to kindly rise for the national anthem. Thank you, ladies and gentlemen. I request you to please remain seated until the chief guest leaves. We would like to inform all present here that on the 11th and 12th of December, 11 a.m. onwards, there will be an Art in Action and Art Workshop during which 25 artists will be participating and creating their artistic pieces on the spot. All are welcome to come and witness this artistic endeavor. Thank you, ladies and gentlemen, and wishing you a very pleasant evening ahead. Good night.